From the following information, prepare relevant notes to the accounts. You only have to prepare a notes to the accounts. Now all the figures are given in the lakhs. First one is sale of goods. Sale of goods is the revenue from the operations. Next one again, sale of services, revenue from operations. Trading commission, revenue from operations. Excise duty, revenue from operations. But this will be subtracted. Excise duty को हमें क्या करना है? We have to just subtract it up. So ये जो भी first four दिए थे, because see what is a sale of the goods या तो services is the highest income. इस यही income है company की, ये main income है. That is why it will be under the revenue from the operations. Then we have interest income, which is the other income. Dividend from the companies, even this is a other income. Net loss on the sale of the investment. Now what we can do over here, we can show this into the other income, but we can subtract this 5 rupees. हम subtraction करके दिखाएंगे, लिखेंगे यही head में और 5 rupees का subtraction करके बताएंगे. Why? Because this is a loss ना, loss हुआ है इसके लिए. Rental income is 20 and rental collection expenses. तो rent collect करने के लिए आपने जो expenses किए थे वो एक्सपेंसेस भी दिए. सो व्हाट वी हैव टू डू व्हेन यू राइट डाउन लाइक दिस, और अगर दो ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है, सो यू हैव, आप इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस कर दो. सो रेंटल इनकम में से आप रेंटल एक्सपेंसेस, कलेक्शन एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे एंड जस्ट राइट इट डाउन द नेट फिगर इन द आउटर कॉलम. सो बेसिकली ये जो हमें हेड्स दिए थे वो किस कौन से दो हेड्स का इंफॉर्मेशन दिया था? वन वाज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर वाज द other income. Now we have to just write it down. Just prepare first the notes to the accounts, give the heading, particulars, rupees in lakh, rupees in lakhs. हम सिर्फ एक नोट्स टू अकाउंट्स बन के भी ये दोनों, मतलब ये दोनों अलग से नहीं बना के हम एक फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. ओके, बट राइट नाउ आई एम शोइंग यू इन द टू फॉर्मेट्स, वरना हम एक साथ एक ही उसमें in the one only table we can show both the notes to the accounts together. But right now, since I am taking it as a like this different. First one is sales of goods. So sale of goods. Sale of service. Trading commission. Just subtract the excise duty. So less excise duty. What either we can do the total में से इसको subtract कर लेते. Wait, take a total together only. This is how much? 3120. बेसिकली फिर ये वाले कॉलम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें. So 960. This is the amount which we got from the revenue from operations. The same way we have to prepare other notes to the accounts of other income. First one is
Dividend from companies. Net loss on the sale of investment. Rental income. क्या करोगे उसमें से? You will subtract the collection expenses. So 20 minus 2. Just for your understanding, I'm just doing like this and showing you up. 18. So total will be 'This is how you have to prepare the notes. So what I was telling कि rather than making this, हम एक ही बना के note number देके we can like this prepare 1 and 1 also. But मैंने ये तुम लोगों को 2 separate बना के दिखाया.